Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, consistent and persistent preparation is must for success in every competitive examination. On this channel, earlier also I have placed a video stating what should be perfect timetable. So, in this video also we will discuss how to prepare perfect timetable. Now, planning is the first steps towards success. If you can plan your things and then execute, you will be winner. So planning involves drafting a timetable. Now every candidate have different time availability. Now some are unemployed, they can spend full day time on studies. Other are employed. Third category can be married ladies. Those are commitment for their family as well as they are preparing for the competition. And then there can be other segment of people depending upon their shift duty and all. They have limited time at their disposal for study. So each and every individual has to first jot down how many hours he or she can spare in a day for study. That is first thing. First planning is identifying number of hours available for study. Jot down this number of hours in your copy. Usually you should spend minimum 10 hours a day for study. Say you are working and you can spare 5 hours a day or 4 hours a day. That means your timetable should be spread to 2 days instead of 1 day. So a simplistic timetable will be spread over a single day, and for a working employee or the married ladies, those have to spend time for their family engagements and others, they can spread this timetable for 2 days. That means half of the timetable they will cover on day 1 and the rest of the timetable they will cover on second day. This is one model. Second model is we can shrink the number of hours per day for each section if we are having less than 10 hours for study. So the ideal timetable is divide these 10 hours into 5 equal time slots. That means one time slot of 2 hours. So the first portion of 2 hours daily must be used for attempting a mock test. The day should start with attempt of a mock test because at that time you are fresh. Then give half an hour rest. Then the next slot should be given to language, that is English. Then half an hour rest. Then the third slot should be given to quant, half an hour rest. Fourth slot should be given to reasoning, half an hour rest. And the fifth slot should be given to general awareness, that involves current affair as well as banking awareness and static GK if it is covered in that very exam. So the entire day is divided into 5 portions. One portion, half an hour rest. Second portion, half an hour rest. Third portion, half an hour rest. And fourth portion, half an hour rest, and so on. Rest means you can engage yourself in the activities that gives you freshness. One can sleep, one can lay, one can watch comedy shows, one can talk with the friends, and whatever activity gives you break from the study and you can say happiness, that is called rest. So that will vary from person to person. Accordingly, you should do it. Now, on this format, we are giving you daily timetable.
So follow daily timetable videos and plan, because many of time you working persons are asking, sir, how to do it. Now a working person is say having 4 hours a day. So what you will do is, one slot is for attempting a mock test, then second slot you will do for 2 hours, then on second day you will attempt the third slot, fourth slot, and next day fifth slot. So your timetable will be spread in 2.5 days. Say a person can spare 5 hours a day, then one slot of mock test, half an hour rest, second slot of English, half an hour rest, and then 1 hour of third slot, and second day 1 hour of third slot, fourth slot, fifth slot. So according to your availability of time, you will adjust this timetable. The purpose of timetable is to have consistency and focus on every subject. Many a candidate, they fail due to their lopsided study, focus on some subjects and ignoring other subjects. So we have to give equal time to all subjects. 3 deadly weapons I have suggested. You must take them. First is good quality mock test. Mock test link is available in description. Click the link, register, take annual plan along with banking sectional mock test. Apply coupon code AA03 to have 10% off. Alternately, you can buy this mock test through Smart Kida app. Download the app. On home page there is a link. Click the link, apply coupon code AA03 and have 10% off. So this is one weapon you should acquire. Second is good quality current affair. For current affair also I have suggested you a very good source. Link is there. Click the link. You will land up on an app. Download the app. Take current year plan. Apply coupon code AA03 to have 10% off. And third is very rich videos on banking, finance and economics. Develop habit of watching 10-15 videos per day from this playlist. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एक कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट पढ़ाई का शेड्यूल हमें कामयाबी दिला सकता है. अधिकांश लोग एग्ज़ाम को इसलिए नहीं पार कर पाते क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं करते और बिना प्लान के तैयारी करते हैं और अल्टीमेटली कामयाब नहीं होते हैं. परफेक्ट टाइम टेबल पे ऑलरेडी हमारी वीडियोस हैं, पर आज क्योंकि काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर नए हैं तो नए सिरे से मैं आपको इस कंसेप्ट को समझा रहा हूँ और इसमें हम फोकस में रख रहे हैं सभी तरह के सब्सक्राइबर्स को. पहले सब्सक्राइबर वो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और पूरा दिन पढ़ाई पे दे सकते हैं. उनको कम से कम 10 घंटे पर डे पढ़ाई करनी है. दूसरा ग्रुप वो है जो एम्प्लॉयड है, वो 4 घंटे 5 घंटे पर डे स्पेयर कर सकता है. तीसरा सेगमेंट है हाउसवाइफ्स, जिनको अपने घरेलू काम के लिए भी टाइम निकालना है और पढ़ाई भी करनी है. वो भी 5 से 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकती है. इसके अलावा भी कई एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं जिनकी शिफ्ट ड्यूटीज़ है. अकॉर्डिंग टू देयर शिफ्ट एंड एक्टिविटीज़ वो अपना स्पेयर टाइम निकालेंगे. तो जो लोग तो 10 घंटे रोज़ दे सकते हैं वो इस टाइम शेड्यूल को सिंगल डे में यूज़ करेंगे. और जिनके पास कम आवर्स हैं, किसी के पास 5 घंटे या 4 घंटे हैं, वो इस टाइम टेबल को अगले दिन तक स्प्रेड ओवर कर जाएंगे. मीन्स जिसके पास 5 घंटे पर डे हैं वो 2 दिन में इस टाइम टेबल को पूरा करेगा. जिसके पास 4 घंटे पर डे है वो 2.5 दिन में इस टाइम टेबल को पूरा करेगा. इस तरीके से आप प्लान करेंगे. ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, 5 पोर्शन कैसे करने हैं 10 घंटे के. एक पोर्शन जो हमारा पोर्शन ए है वो हमारा होगा डेली हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है 1. उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट करना है. सेकंड जो हमारा 2 घंटे का शेड्यूल होगा उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को करेंगे, फिर आधे घंटे का रेस्ट देंगे. तीसरा जो पोर्शन है हमारा क्वांट का होगा, आधे घंटे का रेस्ट करेंगे. चौथा हमारा
रीजनिंग का होगा, आधे घंटे का रेस्ट करेंगे। और पांचवा जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसके अंदर करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके अगर उस पेपर में है तो उसको इस्तेमाल करना है। अब ये तो हो गया जिनके पास फुल डे अवेलेबल है 10 घंटे। अब एक कैंडिडेट है उसके पास 5 घंटे एक दिन अवेलेबल है, 5 घंटे दूसरे दिन अवेलेबल है। वो क्या करेगा, पहले 2 घंटे मॉक टेस्ट, आधे घंटे का रेस्ट, 2 घंटे इंग्लिश, आधे घंटे का रेस्ट, 1 घंटा क्वांट। उसके बाद अगले दिन फिर 1 घंटा क्वांट, आधे घंटे का रेस्ट, 2 घंटे रीजनिंग, आधे घंटे का रेस्ट और 2 घंटे दे देगा वो किसको, जनरल अवेयरनेस को। जिसके पास 4 घंटे हैं वो क्या करेगा, 2 स्लॉट एक दिन में उसको करने हैं, तो 2.5 दिन तक उसका स्प्रेड होगा और 2.5 दिन के बाद फिर वो रिपीट करेगा। तो पहला स्लॉट उसका हो गया मॉक टेस्ट, आधे घंटे का रेस्ट, दूसरा स्लॉट हो गया इंग्लिश, अगले दिन पहला स्लॉट हो गया क्वांट, आधे घंटे का रेस्ट और दूसरा स्लॉट हो गया रीजनिंग, फिर अगले दिन हो गया जनरल अवेयरनेस, 2 घंटे का स्लॉट और फिर आधे घंटे रेस्ट करके फिर वो मॉक टेस्ट पे आ जाएगा और इस तरीके से रोल ओवर करता रहेगा। अब रेस्ट आवर्स में क्या करना है, ये काफ़ी लोग प्रश्न पूछते हैं। रेस्ट का मतलब है जिससे आप रिफ्रेश हो। इसमें अगर आप सो सकते हैं, छोटा सा रेस्ट ले सकते हैं, सिर्फ लेटना है लेट सकते हैं, कोई ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे खुशी मिलती है वो देख सकते हैं, दोस्तों से बात करना चाहते हैं दोस्तों से बात कर सकते हैं, बाहर टहलना चाहते हैं टहल सकते हैं, कोई गेम खेलना चाहते हैं गेम खेल सकते हैं। मीन्स पढ़ाई से हट के कोई और एक्टिविटी जो आपको रिफ्रेश करती है उसको हम रेस्ट बोल रहे हैं। तो अगर हम अपने टाइम टेबल को मेंटेन कर पाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम हर सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। अधिकांश लोग फेल इसलिए होते हैं कि वो लॉपसाइडेड तैयारी करते हैं, कुछ सब्जेक्ट पे अधिक टाइम देते हैं और कुछ सब्जेक्ट को निगलेक्ट करते हैं और वही कारण उनके फेलियर का बनता है। तो परफेक्ट टाइम टेबल वो होता है जहां हम हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें और फिर जब हमें पता लग जाए कि हमारा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है उस पे आखिरी दिनों पे हम ज़्यादा फोकस बढ़ा लेते हैं। और इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप जो डेली टाइम टेबल वीडियोज़ हैं, जो डेली टाइम टेबल शेड्यूल है, अगर उसको देखते रहेंगे तो ये आपका ब्रॉडर मैंने बना दिया एक प्रोजेक्ट और उसको उसके साथ लिंक कर लेंगे, आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको 3 डेडली वेपन आपके पास होने चाहिए। पहला है अच्छा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको दे दिया है, इस लिंक को क्लिक करेंगे और रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान ले लेंगे, साथ में बैंकिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% आपके पास ऑफ आ गया। ये मॉक टेस्ट आप स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, होम पेज पे एक लिंक है उसको क्लिक करेंगे, वहाँ कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। दूसरा डेडली वेपन है आपके पास करंट अफेयर, उसका भी एक अच्छा सोर्स मैंने आपको बताया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, करंट ईयर का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% आपको ऑफ आ जाएगा। इसके बाद थर्ड है बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स की वीडियोस को देखना, बहुत ही शानदार प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 से 15 वीडियो आपको रोज़ देखनी है। अगर आप ये परफेक्ट टाइम टेबल लागू करने में कामयाब हो गए तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और एक प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।